Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to my stove, and I'm your host, AB. So today we have a Lollywood celebrity, and his name is Eddy Baig. Eddy is extremely talented. He is versatile. He did a few famous dramas like Hum Sab Umeed Se Hain and a couple of more TV projects. He has his own YouTube channel by the name Eddy Baig. He's also on Instagram by the same name, Eddy Baig, and on Facebook as well. Recently, Eddy he has worked in a short telefilm named Gulzar. Eddy loves to cook and spend time with his family in his free time whenever he gets a chance. So today, my hair it was done by Rosette by Amina, and they are located in 2210 FCC, Maratab Ali Road, Lahore. So please do check them out and go and get your hair done by Rosette by Amina. All right, so let's welcome our amazing guest, Eddy Baig. Ta-da! Hello. How are you? I'm doing good. How are you, Eddy? Shukr Alhamdulillah. Thank you very much for having me over, by the way. I was really looking forward to your show, by the way. I feel humbled and I'm so happy that you are on my stove. And now, we were introduced by Sadaf Hosseini, who is our moderator. She's a very valuable member of My Stove and our graphic designer. So check her out on @Sai_arts on Instagram and on Facebook, Sai Arts Digital Designs. So a big shout out to Sadaf Hosseini, Sai Arts. Yes. Yay, Sada. Right. So we are very lucky that, we are getting very generous people who are connecting us with amazing and talented members like yourself. All right. So let's see, who do we have here? We have Nuzhat Usmani says looking good. She is from Delaware. Salia Asad Mirza is watching. Nuzhat Usmani says, I have to run in between, just came to see you and our handsome guest, mashallah. So, Eddy, you're already getting the compliments, you're receiving them. I'm blessed. Sadif is watching. Yes, she says, Salam, looking amazing, dear AB, and welcome to my stove, Eddy. Walaikum Aisha assalam. Khan is here. Rahat Latif, my dad in spirits, he is watching and saying, fantastic. A great show. And Nusrat says, oh, wow, you are in Lahore. That's right, Nusrat, I am in Lahore. All right. So, Eddy, what is the story behind your name from Adeel to Eddy? So, by the way, Eddy is my pet name since childhood. Adeel tha. Adeel se, but obviously short form, Zari, but the parents ne, I think once they just started calling me Eddy, तो बस Mm-hmm. फिर वो स्कूल और कॉलेज पे हर जगह एडी 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 शुरू हो गया फिर वर्क प्लेस पे भी like I was working with one of the leading call centers in Lahore, so we had to deal with the people at Santa Clara, California. So we ought to have some pseudonames. So उसमें एडी चला और फिर वो एडी इस तरह चला कि अब हर जगह पे जो everybody calls me Eddy, I जहां think पर भी आप you. सॉरी जी आप क्या कह रही थी मैं कह रही थी, I think it's a cute hip hop name, Eddy, right? I don't know. ये आप ही बता सकते हैं. I think you're the best judge. But yes, I like it. We like it too. I think it's cute. So, what's your upcoming movie, Gulzar? What is it about, and why did you pick this specific role? How do you relate yourself with that? That's a great question. By the way, like I like taking challenging roles, and this script and the director, the writer,
they're really close to my heart. And the name Gulzar, yeah, that was like kind of appealing. Or it's about some bleak reality of our society, जिसको मतलब फसी बारी खान ने एक स्क्रिप्ट करके और कैमरे के ऊपर लेके आए हैं और एक शॉर्ट फिल्म बनाई है. Hmm. स्टोरी क्या है ये मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट ये है कि इस पे परफॉर्मेंस का बहुत मार्जिन दिया गया है. और ये ऐसे कैरेक्टर्स और इस तरह की स्टोरी है कि जो हमारे इस पाकिस्तानी माशरे में हमारे इर्द गिर्द आजकल हो रहा है. सो आई थिंक देखनी चाहिए. बहुत मजेदार है और इंशाल्लाह ताला जल्दी आने वाली है. सो इससे ज्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा ना, मजा खराब हो जाएगा. हाँ हाँ, लेकिन क्या हो रहा है एडी? इर्द गिर्द क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है एक्चुअली. अब मैं मतलब वैसे रोल थोड़ा मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब रोल जो है मेरा उसमें इट्स बेसिकली पिम्प, और इट्स Hmm. अबाउट यू नो सम रियलिटी और उस तरह की कुछ चीजें हैं. Right. और जो कि बेसिकली ये मूवी जो है दैट इज फॉर द यूट्यूब चैनल कबाड़ खाना, जो कि फसी बारी खान जो है उन्होंने उनका चैनल है ये. और इंशाल्लाह जब भी ये होगी और जब रिलीज होगी, होपफुली जी, अगर वी गेट रिड ऑफ डेंगी एंड कोविड इंशाल्लाह ताला, तो I इसका hope हम so प्रीमियर भी too. करेंगे. सॉरी. हाँ. Nee, जी. I hope so too, because we were dealing with COVID, and now we या have dengue. So या even I'm afraid to go out in the evening. I just या avoid going out at night. I know, but like अब people are hanging out, people are dining out, सब लोग अलग अलग अपनी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं. वो उसके साथ भी चल रहे हैं. लाहौरी तो इस तरह ही उनके कर साथ रहे हाँ, हैं. लाहौरी लाहौरी खाने के हाँ. बगैर नहीं रह सकते. Oh yes, अच्छा, yes, बिल्कुल. Rifat Saqib is watching as well. Aisha Zafar is watching. Samar Usman from Ireland is watching. She says, "Hello, Amu. Nice to see you and your lovely guest." Thank you, Samar. Um, so Nuzhat Usmani says, "Oh wow, halanki normally it gets into Addy, like you are Adeel, so Adi." Sadaf Hosseini says, "So sweet of you both, truly humbled. I'm so glad I could connect you both. You both are amazing. Thank you, Sadaf." Ambrina Fandi is watching from Covered Styles. Um, so we have, yes, so Nusrat says it's true. हो तो बहुत कुछ रहा है, but क्या हो रहा है, Eddie? Salia says, "Welcome, Eddie, to my stove. Looking forward to seeing your projects." Great, Acha. great. So, what kind of roles do you like to do? Some of the roles which you really want to do, and some you are not that fond of. Okay, basically मेरे लिए हर role जो है ना, and every role is like kind of a challenging role for me. I like doing challenging roles, and I think until now I didn't get a chance of doing such kind of role. So even if it's controversial and if there is a room for performance, I would love to go for it. So Hmm. despite of everything, because like my family, when I discussed the script and the role with my family, Huh. so I just told them, this is what it is. So they said if you are comfortable with it, so just do it. So that's what I did. मतलब मुझे तो एक challenges accept करना अच्छा लगता है. वैसे Hmm. आम जिंदगी में I like comical roles जो मतलब लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी लेके आए, और ये बेसिकली मेरा फोर्ट है. मिमिक्री थोड़ी सी, और थोड़ी सी कॉमेडी, और थोड़ा सा तंज मजा, और थोड़ी सी विट, ताकि क्योंकि आजकल वैसे भी हम लोग कोई इतनी ज्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, और Huh. जो जो दौर है, तो इसमें आई थिंक हल्का फुल्का रहना चाहिए. उसके लिए जरूरी पॉजिटिव एनर्जी बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमें अपने आप को खुश रखना जरूरी है. तो इसलिए जिस चीज में खुशी मिलती है और अगले का नुकसान उससे नहीं होता, तो मेरे ख्याल में वो चीज हमें करनी चाहिए. बहुत खूबसूरत thought, beautiful thought. And I also feel that entertainment, if you are watching a movie, if you're watching a drama or anything on television, it should be entertaining, right? Yeah. And entertainment is supposed to be fun. It is supposed to be that uplifts your mood, right? So I am also all for comedy, for romance, for light movies. Yeah. Depression, there's so much depression and negativity in the society uh, as well, but it's also important to highlight those issues
True. because dramas, they are the reflection of the society. So वो issues भी बहुत ज़रूरी हैं to True. highlight, right? बिल्कुल, बिल्कुल. अच्छा, आपका, you have a YouTube channel, and how is it different from the rest of the channels? Yes, I see you're wearing a sweatshirt. Yeah. क्या है ये? This is Eddy Baig, the YouTube Yeah, it's channel. Eddy Baig. Yeah, it's Eddy Baig. Basically, हुआ इस तरह से था. मैं आपको in a Hmm. nutshell आपको बताता हूँ. Yes. I was doing my acting projects with different channels since 2005. हम सब उम्मीद से हैं. अब ये होता है कि basically आपको कई दफा चांस मिलता है, but you know with my job हम 25-30 days की आउटडोर पे नहीं जा सकते और इतनी लंबी पेड लीव आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती. विच इज वाई ठीक. एक तो ये चीज है. दूसरा ये कि मैं को इतना कोई बड़ा अदाकार या एक्टर नहीं था कि मुझे प्रोडक्शन हाउसेस या बड़े डायरेक्टर्स वगैरह इसलिए कास्ट करते हाँ. कि जी मेरी एक्टिंग अच्छी है. तो वो ये होता था कि अच्छा ये रोल है, कर सकते हो, आ सकते हो, नहीं आ सकते Hmm. जाओ. तो Hmm. उसमें फिर अब मैं क्या करता, फिर मैंने अब एक्टिंग तो मुझे करनी थी. तो फिर Of मैंने आज course. स्टार्टेड ऑफ, मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके आज स्टार्टेड ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल. पहले एक वीडियो डाली, दो वीडियो डाली, डरा, व्यूज नहीं आ रहे थे, क्या हो रहा है, किस तरह होगा. हाँ. फिर ग्रेजुअली चीजें बढ़ती गई और फिर कंटेंट बनाता गया. फिर लोगों को कुछ समवट पसंद भी आता गया. फिर 4-6 लोग जानने भी लग गए. फिर और मजा आने लग गया, थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिली. तो अब लाइक 1.5 साल हो गया. हाँ, बीच में मैंने भी 6 months का गैप दिया था ड्यू टू कोविड एंड एवरीथिंग, सो आई वाज नॉट डूइंग इट एंड आई वाजंट अप टू इट. तो अब इंशाल्लाह ताला मैंने दोबारा शुरू कर दिया है. सो लेट्स सी क्या होता है. Very good. इसी तरह है ना, that if you're passionate about it and you are consistent, or and या you believe in whatever you are doing, so it takes या time, but once it इट डज. takes off, या then it always, most of the time it's going towards it's going upwards. This is what या happens. ट्रू, ट्रू, एग्जैक्टली. Acha. So, and guys, you feel free to ask questions to Eddy. This is a gup shop कॉर्नर. session. Yes, this is a gup shop session we have. All right. या So, Nadia Shamsi is watching, and Nusrat says she's asking, what was your first ever appearance on TV and when? Okay, that was in 2005. हम सब उम्मीद से, and I was playing the role of बेनज़ीर भुट्टो. हुआ इस तरह से था कि मुझे एक्टिंग करनी थी. मैं जिया के ऑफिस गया और लकीली वहां पे कुछ ऑडिशंस हो रही थी. उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा जी मुझे ऑडिशन के लिए आना है. आई डिडंट नो कि ऑलरेडी Mhm. ऑडिशंस हो रही. सो आई वेंट देयर और उन्होंने कहा अच्छा आप मिमिक्री कर सकते हैं तो हमें ना बेनज़ीर की नकल उतार के दिखाएं. उस वक्त अली सलीम वाज डूइंग बेनज़ीर का रोल एंड ही गॉट बेगम नवाजिश. उन्होंने मैंने 2-3 वर्ड्स, 2-3 अल्फाज बोले, जुमले बोले और उन्होंने कहा स्क्रिप्ट में से पढ़ के दिखाएं. मैंने स्क्रिप्ट में से पढ़ा. उन्होंने कहा ठीक है जाएं, नंबर दें. अगले दिन मुझे कॉल आ गई कि जी आपका शूट है 14 अगस्त के लिए एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक वहां से फिर स्टार्ट हुआ. तो फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी जो टीवी पे थी वो हम सब उम्मीद से एज बेनज़ीर. वेरी नाइस. अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमें भी कुछ थोड़ा सा बता दें कि आपने क्या वहां पे डायलॉग्स बोले ओके. वो नजीर के. बेनज़ीर का आई लव बेनज़ीर और उनके मतलब हर हफ्ते मेरा शूट होता था और इवन मुझे बेनज़ीर से भी महरूमा से अप्रिसिएशन मिली है. और इनफैक्ट हम वो यस. कुछ चंद एक लकी लोग थे जिनका उनसे वहाँ दुबई में जाके उनसे मिलना भी हुआ यस. और उन्होंने फिर लिखा भी कि आई हाँ. गेट ग्लूड टू द टीवी एंड आई हम्म. एम थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग him whenever I have a fight with Asif. So these were her words. So it was Oh, like that is so that meant sweet. world. Yeah, You were that exactly. good. अच्छा, तो Yeah, हमें yeah, बताएं आप, exactly. हाँ. थोड़े से तो फिर बताएं उन्होंने कैसे मुझे कहा किया. कि बोले वो और उनकी तरह बोल के, तो ये कुछ चंद डायलॉग्स हैं जो मैंने बोले थे. इट वाज लाइक मेरी बहनों, भाइयों, किसानों, मजदूरों और जियालों, हमें जनरल इलेक्शंस नहीं चाहिए. हमें इलेक्शंस जनरल के बगैर चाहिए. So it was like that. I like it. I like it. Very nice. Acha, so Eddie, एक और बात कि so you went to for this audition without any contacts, any Yeah, connections, or anything like that. yeah, It's not that easy to get into media without connections. This is how I feel. You need to yeah, have somebody who's able to connect you with someone, right? yeah, yeah. So I mean, it worked out for you. But in general, what do you think? Exactly.
अब लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर ओन इंडस्ट्री। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा माफिया है। बहुत कम लोग होते हैं जो नए लोगों को उनके टैलेंट के बेस पे चांस देते हैं। और ये मेरे अपने साथ हो चुका है। मतलब मैं इसमें Hmm. नेपोटिज्म वगैरह कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, Hmm. बस वो एक ये होता है कि डेफिनेटली एक तो लक भी होती है, बस ये होता है Hmm. कि सही टाइम होता है। अब लाइक जितने भी Hmm. प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स में तकरीबन सभी से मिला हुआ हूँ, हर Hmm. एक मेरी मिमिक्री, मेरी एक्टिंग के ऊपर ये जरूर कहा कि बहुत जबरदस्त, भी वेरी नाइस, और बड़ी जबरदस्त एंटरटेनमेंट है, तुम्हें तो टीवी पे होना चाहिए यार, तुम एक्ट क्यों नहीं Hmm. करते? तो भाई दिला दो Hmm. चांस पे। तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद फंसी। Exactly. Why हाँ, तो not? फिर Huh. एग्जैक्टली exactly. फिर फसी बारी खान से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मतलब मेरा शोज भी देखे, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। तो फसी ने मुझे कहा कि यार मैं तुम्हारे लिए, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन जब होगा तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रोल लिखूंगा। और फिर उन्होंने किया, उन्होंने कहा यार ये रोल है बेटा, और आप आए और रिहर्सल्स पे आइए। तो मैं रिहर्सल पे गया, उन्होंने कहा डन है। वहीं पे उन्होंने जनाब Hmm. फिर मेरा वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह किए, और जनाब उन्होंने कहा अगले वीक सेट लगा हुआ है, तो आपने वहां पे करना है। सो इस तरह से होता है कि जो वाकई में अगर टैलेंट की कदर करते हैं लोग, तो फिर Huh. देन अगेन वो आपको फिर चांस भी देते हैं। इन्होंने रिस्क लिया, इन्होंने नए लोगों को लिया। Hmm. मतलब तमकिनत ऑब्वियसली बड़ी अच्छी अदाकारा है, और उनका नो फिल्टर्स पे उनका यूट्यूब चैनल है। बहुत बहुत जबर, मतलब आप उनके वीडियो देखें, Is it? हंस हंस के आपका बुरा हाल हो जाएगा। उनसे Oh, मेरी yeah, I केमिस्ट्री would love काफी, to. हाँ, Huh. उनसे मेरी केमिस्ट्री काफी मैच होती है। और Hmm. उन्होंने जनाब बड़ा जबरदस्त उसमें रोल किया, और मैं उन्हीं के साथ ही था। तो वो एक इतनी अच्छी बेडेटो के आएगी, तो इंशाल्लाह आपको और ज्यादा अच्छी लगेगी। तो उसमें हमारी केमिस्ट्री इस तरह कि हम एक दूसरे की आंखों में देख के हमें हंसी आ जाती है, हमें पता है आगे क्या बोलना है। तो उन्होंने इसी तरह ही सेट पे माहौल रखा। उन्होंने कहा कि जी, यू हैव फुल रूम, आप अपना जो है अपनी स्क्रिप्ट जिस तरह से आप कर सकते हैं करें, बोलें, और बस ये कि आपने अपने लाइंस जो है उसको सही तरह से प्रोनाउंसिएशन और एक्सप्रेशंस वगैरह पे, इस पे उन्होंने बिल्कुल कहा कि होना है। Hmm. तो वो अल्लाह करे अच्छी चीजें निकले, कोशिश तो हमने बड़ी की। अच्छा, पता है, I feel we have a lot of raw talent. या वी डू। We have phenomenal actors and actresses, and they यस। really don't need to struggle that much, too, right? या I feel एग्जैक्टली। they don't need classes. They don't need drama or acting classes. They're born actors, and it's just phenomenal to see all the beautiful Pakistani dramas and telefilms, या and the acting and the production is going sky high. I या mean, इट it's इज। it's great. या Um, Acha. So, when do you see yourself as a director in the future? I hope so. I pray for the same, because future plans में है मेरा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और किस्मत ने साथ दिया, तो मैं Hmm. चाहूंगा कि मैं एक्टिंग और डायरेक्शन के लिए आई शुड जस्ट गो फॉर अ कोर्स, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आई शुड गो एंड डू अ स्मॉल शॉर्ट कोर्स, और perhaps some kind of diploma, ताकि मुझे बेसिकली थोड़ी सी टेक्निकल फैसिलिटीज, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स, एक्चुअली फैसिलिटीज कह वो रहा हूँ, पता चल वो, जाए, हाँ, हाँ. वो पता चले, एंगल, कैमरा Hmm. एंगल पता चले, किस तरह क्या करना है, एंड या लेट्स सी, बाकी अल्लाह की मर्जी। Yeah, and most of there are quite a few actors who were actors before and then they went into direction, and some they are still actors and directors. या So I think that's a great combo as well. या इट इज एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे ख्याल में आप जब अब एक एक्टर जो होता है ना, वो बेसिकली रियल लाइफ में उस रोल को, मतलब कैमरे के सामने उस रोल को जी रहा होता है। अब हमें जब ये Hmm. बताया था, मैं पूरी रिहर्सल्स की थी, और कहा था कि बेशक ये इसमें थोड़ी सिचुएशनल कॉमेडी होगी, लेकिन ये बहुत सीरियस कैरेक्टर है, और ये बहुत सीरियस इशू है हमारी सोसाइटी का। सो ठीक उस है. चीज को आपने माइंड में रखना है, मद्देनजर रखना है, यू नीड टू कीप दैट इन योर माइंड, व्हेन यू Hmm. आर फेसिंग द कैमरा। So that was a लेकिन big challenge. yes, I'm sorry. Go ahead. Go ahead. Yeah, so that was a big challenge जो कि मतलब हमने किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र, कंफर्ट लेवल इस तरह का था कि बड़ा मजा आया वो काम करने का। तो मेन ये था कि मजा आया. अच्छा, ये जो Yeah, issue you are saying, this issue, it has been there for a very, very long time, even yeah, during the yeah, time of emperors, yeah, during the exactly. time of Mughaliya, True, the true. Mughal time, even before that. And not Yeah, only in the subcontinent, but this issue has been there and it is going to be there, yeah. I feel, till eternity.
This is Exactly. how I It's feel. everywhere. But Part unfortunately, of the like, culture. yeah, exactly. We're talking about culture. So unfortunately, हमारे यहाँ, we do not bring up our social issues like this. और हमें Hmm. फौरन ही अगर कोई इस तरह की चीज होती तो हमें हश हश कर दिया जाता है, या टॉपिक चेंज कर दिया जाता है, या कहते हैं कि क्या फजूल बातें लेके बैठ गए हो, ये क्या है, इस तरह नहीं। ये है Hmm. यार, ये चीज होती है, हमारे इर्द गिर्द होती है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं, और ऐसे हादसात होते हैं। तो क्या मतलब, अगर कोई इंसान, कोई बच्चा या कोई बच्ची ऐसे माहौल में पल बढ़कर और जो कुछ भी वो बन जाए, तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं होता। हाँ, लेकिन वो तो कहा माहौल जाता है। हो वो बैकग्राउंड, वो हाँ कंपनी ऐसी थी ना, या वो तो हाँ, है ही वैसे, उनका तो ब्रॉटअप ही हाँ, वहां पे ऐसा हुआ। यार बिल्कुल। एटलीस्ट देखो कि उसका हो क्या रहा है, वो और क्या उसी है? चीज, उसी कैरेक्टर को हमने वो किया है। But if a child is born and raised या in that environment, that या he thinks that whatever is happening around him is a norm, right? For बिल्कुल, us, it एग्जैक्टली। might be different and not acceptable. But for that person, that's what he or she is grown with. That's what ट्रू, they have seen. ट्रू। मुझे भी So here, मतलब, Malik is. सॉरी, जी जी, बोलिए Yeah, go प्लीज। ahead, please. Go ahead. एक्चुअली मुझे भी कुछ इस तरह के कमेंट्स आए थे जब मैंने पिक्चर्स पोस्ट की थी। कुछ फैमिली मेंबर्स, लेकिन ज्यादातर जो लोग हु क्लेम टू बी माय फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड, उन्होंने भी जनाब के ये तो मैंने क्या शुरू कर दिया, और मैंने कहा ये एक मूवी की, और मूवी के बाद आगे फिर उनका एक एक्सप्रेशन था, ओके। Hmm. सो यू नो Hmm. हजम नहीं हो रहा, लोगों को We डाइजेस्ट नहीं हो रहा। cannot deny these issues. We simply can't because they are very much part of कोर्स वी our कैन नॉट लिव, society. स्टेट ऑफ डिनाइल में हम बहुत ज्यादा रह लिए हैं, और ये चीज हो रही Hmm. है, और हम कहते हैं कि अच्छा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई, तो हम आंखें ऐसा बंद कर कुछ लेते हैं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है. है, ऐसा हो And रहा है। still, we get all the amusement and entertainment यस, through this topic as well, and the या people, या right? एग्जैक्टली, या So here दैट्स ट्रू। Malik from UK says, Assalamu alaikum, lovely Amu and Eddy Baig. Welcome. Anika Javed is from Dubai watching and says, hello. Salih Asad says, wow. Sadaf says, awesome, Eddie. Sarah Rizvi, our moderator from Dubai, is watching as well. And Samreen Fawad is watching too. Now, and guys, please feel free to ask questions. It's an या interactive session, and I want you guys to ask questions to Eddy Big. Now, who या यू कैन are आस्क your एनीथिंग favorite? प्लीज। Eddie's pretty cool about stuff. या So, who are your favorite actors? माय फेवरेट That's a tricky एक्टर, लाइक one. इफ यू टॉकिंग अबाउट Pakistani, like could be Bollywood as well, or Whoever, anyone. whoever. Yeah, could be anyone. um Nasiruddin Shah and Irfan Khan, favorite Nasiruddin actors. Shah is an amazing actor. Yeah, He comes in art movies, and I yeah, he's one of them. cherish his acting and his movies. Yeah. And Okay, so Irfan Khan happens to be my second cousin. He is my from my maternal side, like since they're there in India. So Irfan Khan was my mother's actually first cousin. Sorry, so he happened to be my mamu, Rishte ka mamu. oh, We that's have like, amazing. So then yeah, yeah. Irfan In jo Khan, is he the one who is Amir Khan's nephew or the one who passed No, no, away? no, no. Irfan Khan is the one who passed away last year because of brain tumor. He was a phenomenal actor, no Yeah, doubt about yeah, yeah, it. And it was so yeah, sad when I heard the news yeah, of his yeah, passing yeah, away. Yes, he was yeah, yeah. awesome. कहते हैं ना कैरेक्टर में जान डाल देता है. So he was that Oh sort of a yes, yes. person. Both Behreen. that goes for both Behreen. Nasiruddin Shah and Irfan Khan. Exactly. Sadaf says that's true. People live in their own bubble, which needs to be popped. It's high time now. Samreen Fawad, good to catch you guys. Yes, Samreen, I'm glad that you are watching. Now, where do you see the Lollywood cinema in the future? Is there any Lollywood cinema? Oh yeah, okay. Lollywood cinema, basically, I think people have now started working on their script as well, which is a good thing and a positive sign. Now, like new people are coming and they Hmm. are technically sound as well.
दे नो हाउ, मीन ज्यादातर जब वो ड्रैग कॉन्सेप्ट्स नहीं बन रहे कि जी कहानी ड्रैग होती जा रही हो, 3 घंटे के लिए जा रही है, शॉर्ट एंड स्वीट 1.5 घंटे के लिए अच्छी मूवी सब बन रही है। और इंशाल्लाह आई थिंक अगर इस तरह हमारा डिजिटल मीडिया जो है वो हमें प्रमोट करता रहे, और लाइक वेब सीरीज बनती रहे, और लोग जो है रियलिटी बेस्ड, मतलब अब देखिए ना, फार फेच्ड अगर आप कोई चीज देखें, कोई जिसका कोई तस्वुर ही नहीं है, उससे बहुत बेहतर ऐसी चीज है कि आप टू द पॉइंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए, एक ऐसा इशू या कोई ऐसा मैसेज दीजिए जो कि लोगों को पता, लोग उससे रिलेट कर सके। तो आई थिंक मेरे हाँ, ख्याल में अब लोग, पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन फसी, लुक एट फसी, फसी has taken a chance, और we doing and he's done it। तो तो आप अगर डायरेक्टर बन गए, and are you going to take a chance too with the newcomers, the ओ people who don't डेफिनेटली, have मोस्ट any डेफिनेटली, मोस्ट contacts डेफिनेटली, or connections? ऐसे इतना होना हमारा, चाहिए ना, एडी, बिल्कुल मेरिट पे इतना आना रॉ टैलेंट है चाहिए। हमारे पास, बिल्कुल आना चाहिए, हम्म। बिल्कुल। अब हमारे बेचारे अनफॉर्चुनेटली लोग टिकटॉक पे जाकर और वहां पे एक्सप्रेशंस देके और वहां पर डबिंग करके और वो अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे होते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म हाँ, होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत क्या होता जरूरी है कि है। जब ऑडिशन के लिए आप जाते हैं, तो जो लोग ऑडिशन कर रहे होते हैं वहां पे, बड़े बड़े लोग, बड़े हाँ। बड़े नाम, वो तमाशा बना हम्म। के उनका मजाक उड़ा के और उन्हें भेज देते हैं, या सिंपली ये होता है, हाँ जी डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू, और आगे बेचारे वो हम्म। उस तरह से मायूस होके फिर वो कुछ कर नहीं सकते। I तो think यस, मैं कहना चाहूंगा, unfortunately, majority of the time that happens, that you need to have connections. This is how I feel it. या Even if you यस have डेफिनेटली, talent, they're not going या to give you a role, or they're not going to give you an opportunity because they have somebody else who is well connected, right? This is एग्जैक्टली, how I see it. अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल, दैट्स राइट, Unfortunately, या, बिल्कुल, बिल्कुल आने नहीं देते आगे किसी नए बंदे को, right? नहीं, So, who else? Lekin, if you are true to your work and you are या, passionate like yourself, there was somebody who gave you that chance. Okay. So Mona Fayaz is watching. She says, "Love the fair Amu." Thank you, Mona. You like my hair. Rehana Qayyum is watching, and guys, feel free to ask questions. Now, प्लीज। what are your future plans, Eddie? Okay, as I discussed before, that I really want to study acting and direction. So let's see. Hmm. अगले 1 डेढ़ साल के अंदर प्लान तो मेरे यही है। और डेफिनेटली आई वुड वांट के, मतलब आई वांट टू हैव माय ओन talent management company, and I want to give a chance to the people who really want to act, who really want to work hard, so Yes. they don't have any kind of proper platform. That's why I want to do, उनको मैं चाहे अपने YouTube चैनल के जरिए और कुछ इस तरह करके करूं कि मतलब एटलीस्ट पीपल शुड नो कि वो अनसंग हीरोज वो बेचारे करते हैं जाके एक्टिंग, उनको छोटे मोटे कैरेक्टर्स दे दिए जाते हैं, अगर दिए भी जाते हैं तो सो उनकी Hmm. थोड़ी सी रिकग्निशन हो। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। Hmm. How about the women? Is it easy for women to get a lead role, or बहुत रगड़ा मिलता है उनको, and then they become like stars? How is the industry? आमो एक्चुअली रगड़ा तो बंदों को भी मिलता है और खवातीन बंदर को भी मिलता है। हाँ, सैड बट ट्रू, रगड़े बट ये के होता है। बगैर रोल नहीं मिलता, हीरो और हाँ, हीरोइन रगड़े नहीं के बगैर बनता। नहीं, नहीं, नहीं मिलता वाक़ई में। आपको बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार-बार आपको हम्म। मतलब ज जाके बातें सुननी पड़ती हैं, कई दफ़ा आपके ऊपर ऐसे फ़ोन क्यों बंद होता कर है दिया जी? जाता Why? है। हाँ, Why? बस रगड़े की क्या जरूरत है? If मुझे a person वही has talent, why can't you just या give that person a nice role, right? आई हैव एग्ज़ैक्टली, आई डोंट नो, परहैप्स मुझे यहाँ साइकी ये पर ये समझ नहीं आती। साइकी है, आई थिंक ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी है कि अगर कोई नया आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और जो होगा वो क्या होगा। अगर हमने, मतलब ये तो वैसे भी हमारी लोगों के अंदर भी ये चीज है ना, कि आप एक अच्छा हम्म। काम कर भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, आपका स्टेटस भी हम्म। देख रहे होंगे, मजाल है वो कभी लाइक या कमेंट करके आपकी तारीफ कर दें या आपको अप्रिशिएट कर दें, दे विल हम्म। स्टे कॉन्स्टिपेटेड लाइक दिस। तो वो यही हम्म। हाल फिर उन लोगों का है कि जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी है, और वो जनाब बैठकर सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं, और हद से हद वो ये कहते हैं कि जी विल गेट बैक टू यू, बाकी आपका फोन नहीं सुनना, आपका नंबर ब्लॉक में डाल दिया, आप चक्कर लगाते जाए बस। लेकिन जो वाकई बिल्कुल में जिनको सही। चांस मिल जाता है वो फिर लकी होते हैं कि उनको वाकई में हाँ। हो जाता है और But मिल there जाता है। are good people too. I mean, like, you got the यस, chance. There are उम्मीद यस, पे दुनिया कायम है. There are people who बिल्कुल, would give you a chance, who would support बिल्कुल, you, who would बिल्कुल, appreciate you.
Yes, So, yes. and I feel that this the social media platform is a great platform for people It like is. us who, who are passionate about their work, and we don't need as such somebody else's, support or the chakkar lagana office ke We don't need a sugar daddy, in ha. other words. Because our members are so beautiful, we need their support. Yeah, That's yeah, all we need, right? yeah. True. Bira Bante is watching. Amina Tahir from Rosette, who did my hair today, is watching as well. So Bira is from UK. So you're a big foodie as well. So what kind Alhamdulillah. of cuisines you are into? Okay, so basically, I like desi food and Hmm. simple food. Like I like dal, chawal, achar, aloo ki sabzi, shami kebab, Oh, love keema, it. paratha, kebab paratha, and thing like Huh, that. So huh. simple or desi. I like curry chawal. I love curry, but curry chawal, not everybody can make good curry. You need Of to be course an not, huh? expert to Huh. make curry is You difficult. need to be an It's expert. tricky. Yes. Curry. So Yeah, Bera curry. says loving your new haircut. Thank you, Bera. This is from Rosette by Amina. तो खाना पकाते हैं आप? जी बिल्कुल। जब ऑफ डे क्या होता है और पकाते कुछ करने को नहीं होता तो स्नैक्स कभी कभी अच्छे छोटे मोटे बना लेता हूँ जो कि हैं? थोड़े से समझ में आ जाए और आराम से इजीली बन जाए। तो कोई खट्टे any आलू। quick recipe you would like to share with us verbally? या श्योर, शॉर्ट एंड स्वीट है, कभी ट्राई कीजिएगा। खट्टे आलू की बड़ी जबरदस्त रेसिपी है कि आपने अच्छा, सबसे पहले तो आलू बॉयल करके मैश किए, ठीक है, उनको साइड पे रख दिया। उसके बाद तवे के ऊपर आपने थोड़ा सा सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर और हरा धनिया पाउडर, कलौंजी, अजवाइन, इनको एक तवे पे गरम कर लिया, हल्का सा भून लिया। उसके बाद आपने इसको जो है मिक्स कर लिया अपने मिक्सचर के अंदर। फिर आपने वो ठीक। मिक्सचर जो है ऑयल में डाल दिया, तो हल्का सा ऑयल डाल के उसको जैसे आलू का भरता सा बनाते हैं वो कर दिया। और साथ में आपने गर्म पानी में थोड़ी सी इमली और इमली में शहद या गुड़ या शक्कर डाल के उसको मिक्स कर दिया। और उसके बाद जब थोड़े से बबल्स आने लगे तो हल्का सा इमली के पानी छान के आपने उसके अंदर डाल के मिक्स किया, थोड़ी देर इसको स्टर किया। 5-6 मिनट के बाद स्टर होने के बाद अगर आपके पास घर पे चिप्स पड़े हुए हैं या निम्को पड़ी हुई है, आप हल्का हल्का से उसके ऊपर डालें और उसको चम्मच के साथ खाएं। वो बड़ा जबरदस्त लजीज स्नैक है। कई दफा मैं आई ट्राई लव। कर चुका हूँ, इसलिए मैं इतना फूल चुका हूँ। अच्छा, हाँ, ये तो मुझे ढाबे का याद आ गया है। ओ यस, Dhaba स्ट्रीट फूड। cutlass, sort of dhaba cutlass, right? Something like या that. एग्जैक्टली, बिल्कुल। आलू टिक्की। I'm going to try that. Thank you for या sharing. So, श्योर। acha, what else do I have? And guys, feel free to ask questions. या So, what do you think? Cooking at home or dining out? फॉर श्योर कुकिंग एट होम। आई मीन आई कैन लिव ऑन ऑमलेट। मैं घर और कुछ नहीं हूँ, मैं बाहर से खाने के बजाय प्रेफर ये करूंगा कि घर आके मैं आराम से अपना चीज ऑमलेट बना के और टोस्ट और बेक बीन्स, और दैट्स फाइन, मैं खुश हूँ उसमें। सो फॉर और श्योर साथ क्या एनी टाइम। पराठा और टोस्ट? टोस्ट, घी वाली रोटी, पराठा, कुड बी एनीथिंग। And garam garam chai, right? एंड गरम गरम चाय अदरक वाली। अदरक वाली, ओ माय, या मजे की। ये पाकिस्तान के चोंचले, all Pakistan हाँ ये chonchlas. पाकिस्तान। Yes, which I am हाँ enjoying at the एग्जैक्टली। moment as ओ well. आर यू? Yes. So, so Amna Tahir says, very well said. Guys, if you have any questions, feel free to ask the questions as well, since we have a few more minutes. So, या Eddie, any piece of advice to the Maestro family and to the world in general? Yeah, sure. Advice, like I'm nobody, I'm not in a position to advise anyone because I am an inexperienced and still a struggler. But मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई अथॉरिटी होती है या आपके पास कोई पोजीशन आ जाती है, तो एटलीस्ट यू शुड स्टे हम्बल। आपको लोगों को उस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनकी दिल आजारी उस तरह नहीं करनी चाहिए कि जिस तरह अगर कोई उस टोन में आपसे बात करे तो आपको लगे और आपको
बहुत बुरा लगे उस चीज का। तो कभी भी Hmm. आपको बस किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, अपने फायदे के Hmm. लिए कभी किसी का नुकसान मत कीजिए। स्टे हम्बल, बाकी अल्लाह ताला की जात है, और अल्लाह मियाँ जो है वो किसी को दे के देखता है और किसी से लेके देखता है। सो जस्ट लाइक हैव पेशेंस और हैव योर फेथ, और इंशाल्लाह पॉजिटिव चीजें होंगी। अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा होगा। और मुझे ये तो बहुत कुरान अच्छा शरीफ लगा। में भी कहा गया है कि अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखिए। अच्छे की उम्मीद और उम्मीद अल्लाह पे बिल्कुल। यकीन रखो. So this is बिल्कुल। something which I just read recently. There was something that Allah se umeed to rakhni chahiye. You should stay बिल्कुल। positive. Lekin have faith in Allah Mia, which is very, very important. And I like what you said about staying humble, because I feel that God tests a person by giving him a lot, at Yeah, the same time by taking away things from you, from anybody. So true. I think if we stay humble and if we have the authority, we should make the best out of it by using, by giving it to other people, by making it useful for Absolutely. other individuals rather than just for ourselves. Sure. True. Exactly. I am going to share a fact. Okay, Samreen Fawad says कि cheese omelette zindabad. Okay, so the Hawaiian pizza, Eddie, didn't Oh. come from Hawaii. Okay. That's a fact. Yes, so the Hawaiian pizza did not come from Hawaii. This is the Mm-hmm. 21 legitimate, interesting food facts you should know by Oh, Google. okay. Yes. Okay. Good. So I think that's pretty much it. All And right. we are so thankful for you to be on my stove. You took your time out, and I know that you are a very busy man. And guys, check out his YouTube channel, Eddy Baig. He has highlighted quite a few social issues which are very, very important for us. Their awareness is very important. So, Eddie, I hope we are going to see you in the future, maybe cooking for Inshallah. us, coming up with some new Inshallah. chatpati recipe, just like Inshallah. yourself, right? So, Definitely. And I really loved it. I really enjoyed the show. And I think 40 minutes kaise guzar gaye. So, pata bhi nahi chala. But, I'm really looking forward. And I was actually looking forward to, this show and sessions, because it was like kind of heart to heart thing, or मतलब कुछ edited नहीं था, तो जो आ रहा था वो बोल रहे थे. So, it was good. मजा आया. बहुत मजा and आया. this is why we have this platform. For this Yeah. platform, you don't have to know me. There are no, Yeah. like, of course, if somebody wants to connect me with someone, they are more than welcome. But you really don't have to uh, know me as such to be here. This is for anybody who wants to Exactly. share a recipe or who wants to share whatever educational background or professional background they have. Because our True. main goal is to promote love, peace, tolerance, and multiculturalism. True. So thank Exactly. you so much for endorsing Thanks. all these elements, which we are advocating, and see you in the future really soon. Inshallah. All right. Inshallah. Yeah. Thank you, Eddie. Thank you so much, Thank you so everybody, very much. for Thanks. Yeah, for thanks for watching. having me over. And yeah, and just please guys remember me in your prayers. दुआ करते रहिएगा, और दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है, हर एक को होती है. And thank you very much हर once एक को again. और Pleasure गुलजार to see you. देखिएगा, है ना? No, definitely. गुलजार जो है गुलजार, वो या, thank you, thank you. गुलजार का हाँ, हैशटैग चल रहा है जी, हैशटैग गुलजार शॉर्ट फिल्म. तो वो प्लीज उसको यूज करें, और जो पिक्चर्स है पोस्ट उसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा. और ये हमारे ही इर्द गिर्द हो रहा है, और ये पैगाम हमें लोगों के पास पहचान पहुंचाना है. सो यस, डेफिनेटली वी नीड योर सपोर्ट ऑन दैट. thank you so much, Eddie. थैंक यू. Toodles. Noodles. Right. Right.